हेलो गाइस, वेलकम टू Oliveboard. हैप्पी दशहरा टू यू ऑल. आई होप यू आर एंजॉयिंग योर दशहरा. आज के दिन पे भी आई जस्ट टेक योर 10 to 15 मिनट्स. ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स. एज प्रोमिस्ड, विवाद से विश्वास, आई प्रोमिस्ड यू वील बी कवरिंग इट टुडे इन टुडे सेशन. तो हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और एक स्कीम को कवर करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्कीम इटसेल्फ. तो थैंक यू फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने रिप्लाई किया. योर रिप्लाई कि ठीक है मैम आप कवर करो. इट्स अ वेरी बिग मोटिवेशन और फॉर मी. तो let's start with the first question is, it was launched in the year 20 by Ministry of Finance. So no, it was not launched in the union budget mein hi launched. So anyways, you try to answer. It is mandatory for all GEM portal registered MSMEs. So is this for all GEM portal? Organizations with less than 50% union government stake cannot opt out of this scheme. You have to tell me, is this statement correct? Other than that, contractor can be awarded even up to 100% of the total amount through this scheme. तो मतलब 100% contractor को वापस मिल जाएगा. That is what it says. You can also say option number E if you find all the statements are incorrect. So this is a homework question for you all. आप इसको solve करने का try करना. पहले हम एक बार scheme को discuss कर लेते हैं. तो विवाद से विश्वास 1 स्कीम 2 स्कीम दोनों ही न्यूज़ में थी, बट अभी रिसेंट में 2 आई है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 2 इनिशियली. तो 1 वाज आल्सो रिलेटेड टू योर एमएसएमई. 2 इज आल्सो रिलेटेड टू सेटलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, जहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स आर देयर. तो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट रिलेटेड दिस विवाद से विश्वास 2. इट इज बेसिक ऑफ डूइंग बिजनेस, सेम जैसे विवाद से विश्वास 1. Ministry of Finance is the nodal ministry over here, and in 1 also Ministry of Finance was only there. तो एक चीज याद रखना, चाहे MSME से related scheme, but nodal Ministry of Finance. Next thing, so it is implemented via your GEM portal only. It was via GEM portal only. The settlement portal के through होगी. All information will be disseminated via this portal only. So this is the prime thing. Next thing is voluntary settlement is there. तो हर किसी को involve होने की voluntary settlement. जो dispute है वो long withstanding है, and also जहाँ पे government agencies are involved. Target कौन है? Targets are those जिनका arbitral award अभी भी challenge है, is under challenge in a court. तो अभी court के पास केस है. एक तो कोर्ट का केसेस का बर्डन कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इज द फोकस्ड ओवर है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज कवरेज, व्हाट ऑल इज कवर्ड. तो सारी की सारी गवर्नमेंट आर कवर्ड ओवर हियर, बी इट ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर फर्म्स, यूटी, नेशनल कैप, एनसीटी दिल्ली, अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव एजेंसीज. सारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कवर्ड. एक्सेप्शंस कौन से हैं? तो जैसे कि मेट्रो कॉर्पोरेशन से कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस इफ जो बोर्ड है वो अप्रूव करे. यू कैन स्टे आउट ऑफ दिस स्कीम. So this is all that is there in the scheme regarding coverage part. Then what is the settlement? Settlement किस हिसाब से करेंगे? 100% settlement नहीं मिलेगा. कितना मिलेगा? 85% the net amount awarded or upheld by the court. If the net amount is upheld by the court, तो 85% तक उनका amount मिलेगा. Next thing, अगर arbitral case में है 5% will be awarded. अगर किसी को भी कुछ डाउट हो, they can comment down in the comment section below. Else, if you are liking the lecture, then please do hit the like button. That will be a big motivation for me. And इसी तरह से we try and revise one daily. So this is a question from my end. You have to solve the question. Please, वो जो question है उसका आंसर comment. Next thing, Bharat Tex 2024 Expo organized in which city? Try to tell me कौन से सिटी में भारत टेक्स एक्सपो ऑर्गेनाइज करेंगे. इससे पहले ये बताओ कि भारत टेक्स एक्सपो है, व्हाट इज दिस रिलेटेड टू. अगर ये पता होगा शायद तभी एबल टू सॉल्व इट. टेक्स से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, इट इज समवेयर रिलेटेड टेक्सटाइल. भारत टेक्स, इट विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट दैट विल हैपन इन इंडिया. नेक्स्ट ईयर होगा फरवरी में 2024. दैट इज नेक्स्ट ईयर. 40+ कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट. एक सिंगल रूफ के अंदर 40+ कंट्रीज आएंगे. कहाँ होगा? तो इट विल बी भारत मंडपम, द सेम प्लेस जहाँ G20 की मीटिंग सारी कंक्लूड हुई थी, वो वही सेम जगह है. यशोभूमि कॉम्प्लेक्स विच इज दिल्ली, प्रगति मैदान. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेक्स्ट ईयर होगा.
इसका विजन क्या है? देयर इज 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री फैशन एंड टू फॉरेन. तो बेसिकली हम इंडियन ब्रांड को ग्लोबल बनाना चाहते हैं, इंडियन ब्रांड्स टू बिकम ग्लोबल, ग्लोबली एक्नॉलेज. तो देयरफॉर this is the vision to give via Bharat Tech Expo. नेक्स्ट थिंग, एम क्या है? तो ऑब्वियसली हैंडमेड इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट करना, हैंडमेड कल्चर को, हमारे जो हैंडमेड लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करना, आर्ट एंड क्राफ्ट को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना, प्रॉपर ब्रांडिंग कराना. दैट इज व्हाट द मेन एम इज. नेक्स्ट थिंग इज the launch of Kasturi Cotton Bharat website is also there. This is an initiative of Ministry of Textile, Cotton Corporation of India. So you have to remember this कि Kasturi Cotton Bharat website ये किसका initiative है? Cotton Corporation of India with Ministry of Textile. तो इन दोनों ने मिलकर भारत कस्तूरी जो कॉटन है is specifically a special type of cotton जो variety काफी superior है. Aim क्या है? Enhance करना कॉटन की competitiveness. तो इंडिया बहुत प्रीमियर क्वालिटी की कॉटन ग्रो करता है. आई होप यू कॉटन इंडिया में ब्लैक सॉइल पे ही ग्रो करती है. फॉर कॉटन वी नीड ब्लैक सॉइल और पिंक बॉलवॉर्म. कॉटन इज गेटिंग अफेक्टेड. हमारा जो प्रोड्यूस है सर्टेनली उतना लेवल का नहीं है. तो फॉर दिस देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स विच टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अप विद. Next thing is exhibitors from 40 plus countries will be there, already told you, and this is an industry led initiative with 12 textile related export council. So basically led initiative hai, halaki it was announced by Prime Minister. So that is what is there in this news. So tell me now what could be the correct answer. Bharat Tech's organized or New Delhi अगले साल होगा, तो definitely have to we'll be looking at this again in the in next year जब भी February में. Now next, what is the primary purpose of Anubhav? You tell me what is the purpose of portal. Anubhav portal, is it related to providing job opportunities for government retires? तो जो भी government retire हो गए उनको job पहुंचानी है, या फिर to showcase retired government employees remarkable work experience? Is this the answer? Yes. Hosting online events and webinars for retirees. This is it for this, or offline financial support to retired government employees, or promoting government policies and initiatives for your retired government employees only? What could be the right answer according to you? So basically ये अनुभव 2015. तो बेसिकली दिस वाज जो retired government employees हैं वो अपने अनुभव शेयर कर पाए. तो फॉर दैट वो अपने अनुभव शेयर कर पाए. फॉर दैट दिस portal was there, launched in 2015. PQ News. Because Anubhav Awards are being organized. तो देखते हैं इन awards किसको किसको मिलेंगे. We'll see that in the upcoming minutes. But for now on, Anubhav portal is basically showcasing remarkable work and experience. Homework question for you all is Anubhav portal ये किसका पोर्टल है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको मैनेज करी है? यू कैन आइदर टेल मी द मिनिस्ट्री और यू कैन ऑल्सो टेल द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट थिंग, what is the name of the operation launched by CBI? This that CBI has launched along with Microsoft and Amazon. Take a note of this as well, which is to fight against organized cyber enabled financial crimes in India. Transnational cyber enabled financial crimes in India. इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली दिस इज being launched with your CBI, Microsoft and Amazon. इन तीनों को जरूर ध्यान में रखना. CBI, Microsoft and now try to the question. Raksha, is it Operation Chakra 2? Is it Operation Cyber Guard? Is it Operation Financial Shield or Operation Tech Safeguard? What could be the correct answer according to you? You can just have a look at thing and let us discuss about the news. Yes, Operation Chakra 2 is the right answer. So matlab option number B is correct. इसमें CBI is partnering with Microsoft and Amazon combat infrastructure तक calls बंद किया जा सके. We all know कि कॉल सेंटर्स के थ्रू ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है. So that is why this is in. Next thing, the CBI is working with FBI. अकेले ही काम नहीं कर रही. फॉरेन जैसे फेडरल ब्यूरो of this USA, and other than that cyber crime directorate IFSCA of Interpol. तो मतलब US के साथ, इंटरपोल के साथ, इनफैक्ट नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ UK, सिंगापुर की साथ, और इनफैक्ट जर्मन की भी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके दिस ऑपरेशन इज बीइंग लॉन्च्ड. So yes, option number D is the correct answer. So as I have told you guys कि ज़्यादा न्यूज़ नहीं, will not take much of your time. That's all from my side. Now a homework question for you all.
प्रधानमंत्री अजय AJAY, प्रधानमंत्री अजय योजना, or you can say प्रधानमंत्री अजय scheme was there in news. You have to tell me what is the full form of Ajay in the comment section below. Other than that, you have to also tell me कि when was the scheme launched, ये scheme किससे related है, ताकि हम कल के सेशन दोबारा से रिवाइज कर पाए. See guys, अगर आप लोग respond करोगे properly, then also I get motivated to give you better with respect to schemes and बहुत ज़्यादा आज we'll come up tomorrow with all the new articles which will be there. That's all from my side. Thank you and have a nice day.